हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज का जो टॉपिक है इमरजेंसी प्रोविज़न। जैसा कि ये पॉलिटी का एक टॉपिक है, इसमें जो इमरजेंसी प्रोविज़न में आर्टिकल 352 आर्टिकल 360 हम लोग देखते हैं। अगर इमरजेंसी को डिफाइन किया जाए, सर्कमस्टांसेस विच कॉल फॉर इमीडिएट एक्शन और रेमेडी। ठीक है, यानी इमरजेंसी मतलब ये होता है ऐसा कोई सर्कमस्टांसेस क्रिएट हो और उसके लिए त्वरित कार्रवाई किया जाए, रेमेडी हो। इमरजेंसी प्रोविज़न में क्या है? टू मेंटेन द सिक्योरिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, यानी देश की सिक्योरिटी और इंटीग्रिटी को हम कैसे मेंटेन रख सकें। तो ये 3 तरीके का होता है भाई साहब। पहला होता है नेशनल इमरजेंसी, जिसको आर्टिकल 352 कहते हैं। अगला है स्टेट इमरजेंसी, इसमें आर्टिकल 356 है। और तीसरा है फाइनेंशियल इमरजेंसी, इसमें आर्टिकल 360 के बारे में। प्रेसिडेंट इफ सेटिस्फाई कैन प्रोक्लेम इंटर ए पार्ट ऑफ इंडिया। देखिए, राष्ट्रपति अगर सेटिस्फाई हो जाता है कि भारत पे थ्रेट ऑफ द सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, इंडिया के सिक्योरिटी पे खतरा है, या वार और एक्सटर्नल एग्रीगेशन और आर्म रेबेलियन, या वार का कंडीशन हो, या बाहरी कोई आक्रमण जैसी संभावना बनी हो, या हमारे सशस्त्र विद्रोह हो जाए, इन कंडीशनों पे प्रेसिडेंट महोदय इमरजेंसी जैसी चीज़ें लगा सकते हैं। आफ्टर रिसीविंग ए रिटन रिकमेंडेशन फ्रॉम द कैबिनेट, यानी कैबिनेट से रिटन रिकमेंडेशन की आवश्यकता होगी। मस्ट बी अप्रूव्ड बाई पार्लियामेंट विद इन 6 मंथ्स, और इसको अप्रूव करेंगे 1 महीने के अंदर। इफ़ प्रोवाइड शैल कंटिन्यू फॉर 6 मंथ, अगर ज़रूरत पड़ती है तो उसको 6 महीने के लिए बढ़ा दिया जाता है। इंडिफिनिट पीरियड विथ अप्रूवल एवरी 6 मंथ। इमरजेंसी कब कब लगा था? अक्टूबर 1962 में, जब चाइना से वार हुआ था। दूसरा इमरजेंसी लगी थी दिसंबर 1971 में, इंडिया पाकिस्तान वार हुआ था। तीसरा इमरजेंसी जून 1975 में। इंटरनल डिस्टर्बेंस आर्म रेबेलियन सिंस आफ्टर 44th अमेंडमेंट 1978 कैन नॉट बी डिक्लेयर्ड ऑन इंटरनल डिस्टर्बेंस। अगला है इम्पैक्ट ऑफ नेशनल इमरजेंसी, यानी नेशनल इमरजेंसी पे इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, यानी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर ऑफ द यूनियन ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी। पहला पॉइंट है, President can give direction to any state manner in which its executive power is exercised. Second one is, Parliament can extend the normal tenure of Lok Sabha by 1 year at a time. तीसरा क्या है? President can modify pattern of distribution of financial resources between union and states. चौथा क्या है? Parliament empowered to legislate on state subject. अगला है सस्पेंशन ऑफ आर्टिकल 19 राइट टू सेक्स फ्रीडम। इम्पैक्ट बिफोर 44th अमेंडमेंट 1978। एज पर आर्टिकल 358 ऑटोमेटिक सस्पेंशन ऑफ आर्टिकल 19 वार और एक्सटर्नल एग्रीगेशन इफेक्ट वाज टू रिमूव द लिमिटेशन इम्पोज बाय आर्टिकल 19 ऑन द लेजिस्लेचर। एंटी एग्जीक्यूटिव इफ लेजिस्लेचर मेक ए लॉ और एग्जीक्यूटिव commit an act which were inconsistent with the fundamental rights guaranteed by Article 19, their validity cannot be questioned or challenged either during or after such emergency ceased to exist. Impact after 44th Amendment 1978. Armed rebellion, Article 19 cannot be suspended. Security of India or any part thereof threatened by war or external aggression, then Article 90 is suspended, restored, revived automatically as soon as proclamation of emergency is withdrawn. अगला है suspension of other fundamental rights. Impact before 44th Amendment 1978 as per Article 359. Suspension of all fundamental rights other than Article 19 during emergency under Article 352. Under Article 359, fundamental rights as such are not suspended. What is suspended in their enforcement? Not automatic, but by an executive order by President cannot move any court for enforcement of fundamental rights for the period in the order. Impact after 44th Amendment 1978. Restrict scope of Article 359. No longer possible to suspend Article 20 and 21. Article 355, duty of the Union to protect state. First one is against external aggregation. Second one is internal disturbance. Third है ensure state government function in according to constitutional provision.
आर्टिकल 356, इसमें हम लोग देखेंगे स्टेट इमरजेंसी यानी प्रेसिडेंट रूल। प्रोविज़न इन केस ऑफ फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन स्टेट्स, प्रेसिडेंट इज सेटिस्फाइड बेस्ड आइदर ऑन गवर्नर report or otherwise the governor not possible per constitution. No majority party, coalition party in state legislature. State government loses majority. State government function in manner subversive of constitution. State government does not comply with direction issued by central government. And security of state threat widespread law other breakdown. Parliament approved within 2 months. If approved, remain the force to 6 months, extended to maximum period of 3 months. Beyond 1 year can be extended by 6 months at a time. Only when the following two conditions are fulfilled. First one is a proclamation of national emergency should be in operation in the entire country or in the whole or any part of the concurrent states. The the Election Commission must satisfy that the general election to the concerned state legislative assembly cannot be held on account of difficulty. President acquire extraordinary power, can assign himself all or any of the function of the state government, all or any of the power vested to the governor or any body or authority in the states, can declare that the power of state legislature shall be exercised by or order the authority of the parliament, can authorize when the Lok Sabha is not in session, expenditure from the consolidated fund of the state pending parliamentary sanction, can promulgate ordinance for the administration of the state when the parliament is not session, means dissolve the state council of ministers headed by CM and the state legislature. Parliament passes the safe budget and legislation bill. State governor on behalf of the president carries on the state administration with the help of advisory appointment by the president or the chief secretary of the state. High court consolidated status, position, power and function are not affected. President cannot interfere with the high court jurisdiction. Article 360, financial emergency. If president is satisfied financial instability or credit of India or any part is threatened, such proclamation must be approved by Parliament within 2 months. The President can give direction to the state to observe canons of financial properties, issue declaration for the reduction of salary and allowances of all any class of persons, require that all the money and the other financial bills passed the state legislature be reserved for his consideration. अगला है issue direction for the reduction of salary and allowances of all any class of person serving in connection with the affair of the union, including the judge of the Supreme Court and High Court. Thank you. चलाओ जो पंखा